बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। मैं हूं स्टूडेंट्स। नाज़िया उम्मीद कमल है बालिक जो और है कि सब हम मेंबर्स जो कर हैं वो रहे थे खैरियत से होंगे। जीन एंड और अब तो क्रोमोसोमल टेस्ट की डेट म्यूटेशन भी को अभी डिस्कस। पोस्टपोन होगी है, तो उसमें सब अपनी पार्ट वन तैयारी जो भी है जो है उसको उसको में मजीद जीन म्यूटेशन डिफाइन को कर किया रहे था होंगे, और रिफाइन पार्ट कर रहे टू होंगे। में आज जो हमारे क्रोमोसोमल टेस्ट है एब्रेशन स्केड्यूल के के हवाले मुताबिक से आपको आज अनाउंस भी किया गया डिस्कशन और होगी। आपकी और जो आपके साथ क्रोमोसोमल सजेस्टेड रीडिंग्स भी शेयर एब्रेशन जो की। है दैट इज वी कैन ऑन से द डिस्क्रिप्टिव चेंजेस इन द एम्ब्रियोलॉजी। क्रोमोसोम टेस्ट का नंबर पैटर्न सेम और है, आपने 50 स्ट्रक्चर। एमसीक्यूज अटेम्प्ट तो करने हैं अगर और क्रोमोसोम की स्लाइड बाय स्ट्रक्चर स्लाइड में आपने अपने चेंजेस है तो आंसर्स को उसे हम मार्क क्या करना है कहेंगे और एट द स्ट्रक्चरल एंड ऑफ द टेस्ट एब्रेशन, आपने और अपने अगर स्कोर को नंबर जो है वो वाइज चेंज है तो उसे कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल और हमारे चेंज साथ कहेंगे। जरूर शेयर करना है तो आज के टॉपिक ताकि में जो है हम वो हम भी स्ट्रक्चरल अपनी चेंज को, हमारी भी स्ट्रक्चरल असेसमेंट हो क्रोमोसोमल और म्यूटेशन टेस्ट के को साथ साथ आपकी भी जो है वो असेसमेंट है वो डिस्कस अच्छे से होगी। करेंगे। और जो पार्ट थ्री होगा स्टार्ट करते म्यूटेशन हैं का अपने उसमें क्वेश्चंस के साथ। न्यूमेरिकल और एक और जो है इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं क्रोमोसोमल हर यानी बार शेयर क्रोमोसोम करती हूँ आप नंबर सबसे कि वाइज आपने चेंज बोथ क्वेश्चंस इन को द भी नंबर जरूर और नोट द डाउन करना है। और क्रोमोसोम उसका फायदा सेट ये होता है वाइज कि चेंज उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी पोलाइडी को डिस्कस करेंगे। तो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बालिक जो है कि सब मेंबर्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। और अब तो टेस्ट की डेट भी अभी पोस्टपोन होगी है, तो सब अपनी तैयारी भी जो है उसको मजीद डिफाइन कर रहे होंगे, रिफाइन कर रहे होंगे। आज जो हमारे टेस्ट है स्केड्यूल के मुताबिक आपको अनाउंस भी किया गया और आपकी जो आपके साथ सजेस्टेड रीडिंग्स भी शेयर की। दैट इज ऑन डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। टेस्ट का पैटर्न सेम है, आपने 50 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं और स्लाइड बाय स्लाइड आपने अपने आंसर्स को मार्क करना है और एट द एंड ऑफ द टेस्ट आपने अपने स्कोर को जो है वो कैलकुलेट करना है और हमारे साथ जरूर शेयर करना है ताकि जो है वो हम भी हमारी भी असेसमेंट हो और टेस्ट के साथ साथ आपकी भी असेसमेंट जो है वो अच्छे से होगी। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं हर बार शेयर करती हूँ आप सबसे कि आपने क्वेश्चंस को भी जरूर नोट डाउन करना है। और उसका फायदा ये होता है कि जब हम साथ साथ क्वेश्चंस भी नोट डाउन कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक रिवीजन चल रही होती है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम जब ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट सिमिलर हो, स्टेटमेंट जाहिर सी बात है वेरी करेगी, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो सिमिलर होगी। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जब हमें समझ आ जाएगी तो हम फिर आंसर्स को अच्छे से मार्क कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ओवोविविपेरस एनिमल। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए बास्किंग शार्क, ऑप्शन बी बोनोबो, ऑप्शन सी ब्लू शार्क एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब देखिए ओवोविविपेरस कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बट ऑप्शंस में कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हो सकते हैं क्योंकि क्योंकि बहुत सारे मैमल्स में भी और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं और उनकी सब क्लासेस में भी ये चीज कंफ्यूजिंग है। हम हर किसी के बारे में नहीं जानते होते। कॉमन कॉमन हमें सबको याद होगा कि ओविपेरस कौन है, विविपेरस कौन है या ओवोविविपेरस कौन है। तो जो ऑप्शन ऐसे जो यूनिक होते हैं तो बेसिकली हमें वो याद नहीं होते या हमें पता नहीं होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो किसी और जो ऑप्शन है इनमें से ऑप्शन वेरी भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एम्ब्रियोलॉजी के लिहाज से है तो बहुत बेसिक, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि इसमें हम ऑप्शंस को चेंज कर करके याद करें कि ओवोविविपेरस कौन कौन हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इमोर्टल। ऑप्शन ए ग्लोमेरुलर सेल, ऑप्शन बी सोमैटिक सेल, ऑप्शन सी cells of pituitary and option D germ cell. Question number 3. The estimated number of germ cells by the end of 5th month is option A 4 million, option B 5 million, option C 6 million and option D 7 million. अब यहाँ पे 5th मंथ का क्वेश्चन है, 4th मंथ भी हो सकता है, 6th मंथ भी हो सकता है, 7 मंथ भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है मतलब जितना भी गेस्टेशन पीरियड है वो वेरी कर सकता है और इवन स्पीशी वेरी कर सकती है। यहाँ पे मैमल्स के अकॉर्डिंगली या ह्यूमन के अकॉर्डिंगली पूछा हुआ है, तो स्पीशी भी वेरी कर सकती है। किसी और वर्टिब्रेट का भी पूछा जा सकता है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 4. Primary oocyte remains in option A prophase, option B metaphase, option C anaphase and option D telophase.
आई होप अपने अपने क्वेश्चन जो है उनको नोट डाउन कर लिया है और आंसर्स को मार्क कर लिया है। आंसर की से वेरीफाई करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका राइट ऑप्शन है ए, बास्किंग शार्क। बास्किंग शार्क जो है वो व्हेल शार्क के बाद सेकंड लार्जेस्ट शार्क है साइज के हवाले से, और बेसिकली जो इसमें भी जो ओवोविविपेरस टाइप ऑफ डेवलपमेंट है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो दैट रिलाई ऑन योक बिफोर प्लेसेंटा डेवलपमेंट। बास्किंग शार्क राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन जो है जी उसका राइट ऑप्शन है डी, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को इमोर्टल सेल्स कहते हैं क्योंकि जर्म सेल ने फर्दर डिवाइड होना होता है न्यू सेल्स को जो है वो बनाने के लिए, और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जर्म सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, ट्रांसफर हो रहे होते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो हम इनको इमोर्टल सेल्स कहते हैं कि ये कभी खत्म नहीं होती। इसके अलावा जो इमोर्टल सेल्स है वो हेला सेल लाइन जो है कैंसर की, उनको भी जो है वो इमोर्टल सेल्स कहते हैं बिकॉज दे हैव पोटेंशियल टू डिवाइड एंड रीडिवाइड अगेन एंड अगेन। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है जी उसका राइट ऑप्शन है 7 मिलियन यानी कि ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है ए, प्रोफेज। प्रोफेज जो है प्राइमरी oocyte जो है वो प्रोफेज में डिप्लोटीन स्टेज पे जो है वो मेंटेन रखते हैं अपने आप को हॉल्ट रखते हैं अनटिल प्यूबर्टी, और जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है फिर जो है वो प्राइमरी oocyte डिप्लोटीन की स्टेज से फर्दर जो है वो मूव करते हैं, नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। और कुछ प्राइमरी oocytes ऐसे भी होते हैं जो कि आफ्टर प्यूबर्टी भी जो है वो प्रोफेज में मतलब हॉल्ट रहते हैं, और वो मतलब मोर देन 40-50 ईयर्स ऑफ द फीमेल जो एज है वो उसी स्टेट में जो है वो हॉल्ट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय, गिवन ऑप्शंस में जी ऑप्शन ए TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH, ऑप्शन सी MSH एंड ऑप्शन डी ACTH। Question number 6. The oocyte is embedded in mound of option A follicular cells, option B theca externa, option C granulosa cells, and option D both A and C. Question number 7. Granulosa cells surrounds the oocytes and remain intact and form option A antrum, option B cumulus of Forres, option C antral, and option D none of these. Question number 8. The lytic enzyme released by sperm is option A ligase, option B acrosome, option C hyaluronidase, and option D none of these. क्वेश्चन नंबर 5 से 8 के आंसर्स चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है बी, follicle stimulating hormone. Oogenesis and spermatogenesis, both the processes are induced by FSH. And question number 6 जो है जी उसका राइट ऑप्शन है सी, granulosa cell. बल्कि इसका राइट ऑप्शन डी है बिकॉज ग्रेनुलोसा सेल को फॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं, तो दोनों ए और सी जो है वो इसके राइट ऑप्शन में आ सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है जी उसका राइट आंसर है जी बी, क्यूमुलस ऑफ फॉरेस्ट। क्यूमुलस ऑफ फॉरेस्ट बेसिकली जो है वो ओवेरियन फॉलिकल सेल्स और ओवुलेशन के प्रोसेस के बाद भी, और जो ओवरी में अगर फॉलिकल प्रेजेंट है तो उनके साथ क्यूमुलस ऑफ फॉरेस्ट प्रेजेंट होता है, और क्यूमुलस ऑफ फॉरेस्ट जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन में फंक्शन परफॉर्म करता है और कोऑर्डिनेशन करवाता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट की एंड oocyte मैच्योरेशन की। तो क्यूमुलस ऑफ फॉरेस्ट का सेपरेटली क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्यूमुलस ऑफ फॉरेस्ट का फंक्शन क्या है, तो जी इसका फंक्शन है कोऑर्डिनेशन अमंग फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड oocyte मैच्योरेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका राइट ऑप्शन है सी, हाइलोरोनिडेज। हाइलोरोनिडेज बेसिकली एंजाइम जो है वो सेक्रीट होता है एक्ट्रोसोम पार्ट ऑफ द स्पर्म से, कैप ऑफ द स्पर्म जिसको कहते हैं जी। Question number 9. After a sperm has penetrated an ovum in the process of fertilization, entry of further sperm is prevented by
Option A, condensation of yolk. Option B, development of vitelline membrane. Option C, zona pellucida. And option D, corona radiata. Question number 10. Fetal part of mammalian placenta has option A, outer layer of trophoblast. Option B, allantoic. Option C, endothelia of capilaries of allantoic artery and vein. And option D, all of these. Question number 11. Fertilization of sperm and ovum takes place in option A, ampulla of oviduct, option B, isthmus of oviduct, option C, femori of oviduct, and option D, uterus. आई होप आपने क्वेश्चन 9 से 11 तक के आंसर्स को मार्क कर लिया है और क्वेश्चंस को भी नोट डाउन किया होगा डेफिनेटली। आंसर कैसे चेक करते हैं? जो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है सी, जूना पैलोसिडा। जूना पैलोसिडा क्योंकि फर्स्ट लेयर ऑफ एग है तो डेफिनेटली पहले इसके बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा स्पर्म को, तो जूना पैलोसिडा प्रिवेंट करिए उसको, और कोरोना रेडिएटा जो है वो सेकंड लेयर होती है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है जी उसका राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। ये जितनी भी ए बी सी पार्ट्स हैं या ऑप्शंस हैं ये मेलियन प्लेसेंटा के पार्ट है, सॉरी फीटल प्लेसेंटा के पार्ट है मैमल्स में। एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका राइट ऑप्शन है ए, एम्प्यूला ऑफ ओविडक्ट। एम्प्यूला पार्ट में जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो होगी और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो मूवमेंट है उसकी टुवर्ड्स द यूट्रस स्टार्ट होगी। Question number 12. The nutritive material for the ejaculated sperm is given by option A, fallopian tubes, option B, uterine tube, option C, seminal fluid, and option D, vaginal fluid. Question number 13. In man, sperm move after ejaculation at the rate of nearly option A, 2 to 4 inches per minute, option B, 2 to 4 millimeter per minute, option C, 2 to 4 centimeter per minute, and option D, none of these. Question number 14. Wolffian duct is also known as option A, mesonephric duct, option B, ejaculatory duct, option C, major sublingual duct, and option D, cystic duct. Question number 15. Sex of the fetus can be determined in option A, 12th week, option B, 8th week, option C, 6th week, and option D, 5th week. आंसर किससे चेक करते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 जो है जी उसका राइट ऑप्शन है सी, सेमिनल फ्लूइड जो है वो न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी, 2 to 4 millimeter per minute स्पर्म की स्पीड है मूवमेंट की। एंड क्वेश्चन नंबर 14 जो है जी उसका राइट ऑप्शन है ए, मेसोनेफ्रिक डक्ट। वुल्फियन डक्ट जो है इसको मेसोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं, ये मेसोनेफ्रिक डक्ट को जो है वुल्फियन डक्ट भी कहते हैं। और जो बेसिकली ये एम्ब्रियोनिक स्टेट में जो प्रिमिटिव किडनी है मेसोनेफ्रॉन ये उसमें प्रेजेंट होगी, उसकी फॉर्म है एक। और सेक्स ऑफ द fetus can be determined in 12th week, option A. Question number 16. By the end of 5th month, weight of the fetus is, अच्छा जैसे यहाँ पे ग्राम में ऑप्शन है, ये ऑप्शन पाउंड्स में भी हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, या जैसे 5th मंथ का क्वेश्चन है तो 4th मंथ भी हो सकता है, या 6th 7th मंथ भी हो सकता है। और वेट जो है उसके लिए दोनों यूनिट यानी ग्राम में भी और पाउंड्स में भी, तो दोनों यूनिट के लिहाज से हमें पता होना चाहिए कि कितने पाउंड जो है वो इक्वल है कितने ग्राम के। अच्छा जी, ऑप्शंस में गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए 500 ग्राम, ऑप्शन बी 600 ग्राम, ऑप्शन सी 700 ग्राम एंड ऑप्शन डी 800 ग्राम।
Question number 17. By the end of intrauterine life, skin is covered by. यूट्रस के अंदर की जो लाइफ, जब fetus की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो स्किन के ऊपर क्या कवरिंग होगी? ऑप्शन ए whitish fatty substance, ऑप्शन बी yellowish fatty substance, ऑप्शन सी bluish fatty substance, and option D none of these. Question number 18. At the time of baby birth, pituitary gland of baby secretes option A FSH, option B ACTH, option C LH, and option D GnRH. Question number 19. Vernix caseosa is composed of option A sweat gland, option B sebaceous gland, option C pituitary gland, and option D pineal gland. आंसर किससे चेक करते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका राइट ऑप्शन है 500 ग्राम। बाय द एंड ऑफ 5th मंथ जो फीटस का वेट है दैट विल बी 500 ग्राम। इंचेस में अगर बात करें तो 10 इंचेस, 10 to 12 इंचेस होगा। पाउंड्स में अगर बात करें तो 1 पाउंड ऑलमोस्ट होगा। और ग्राम में भी अगर हम रेशो की यानी हम अगर रेंज की बात करें तो ये वेरी कर सकता है फ्रॉम 450 to 590। तो सारे ही ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर लिए कि अगर ग्राम में है तो कितना होगा, और अगर रेंज की बात करें तो 450 to 590 जो है इसकी रेंज बनती है, और यूजुअली जो है वो 500 ग्राम होगा। और अगर पाउंड्स में बात करें तो ऑलमोस्ट 1 पाउंड और 1.2.5 पाउंड के इक्वल भी हो सकता है। तो हर लिहाज से जो है वो हमें मंथ मतलब जो गेस्टेशन मंथ्स हैं आफ्टर 3 to 7 मंथ या 8th मंथ जो है वो इसका क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन है जी वो है सी ए व्हाइटिश फैटी सब्सटेंस, और उस व्हाइटिश फैटी सब्सटेंस को जो है वो वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वर्निक्स कैसियोसा जो है वो बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर है, तो वो व्हाइटिश फैटी सब्सटेंस है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है ACTH। जो फीटस है ये बेबी के जो टाइम बर्थ के टाइम पे ACTH फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो कि मदर में जाके प्रोजेस्टेरॉन की जो सिक्रीशन है उसको रिड्यूस करता है और जो लेबर पेन है उसको इंड्यूस करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 जो है जी वर्निक्स कैसियोसा जो है वो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, या सेबेशियस ग्लैंड का जो ग्रुप है उसको वर्निक्स कैसियोसा भी कहते हैं। तो ये 17 और 19 जो है वो दोनों रिलेट भी कर रहे हैं ऑप्शंस, लेकिन दोनों देखने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वीक आईज बिकम सेंसिटिव टू लाइट? फीटस की आईज किस वीक में सेंसिटिव होती हैं फॉर द लाइट? ऑप्शन ए 7th वीक, ऑप्शन बी 16th वीक, ऑप्शन सी 26th वीक, एंड ऑप्शन डी 28th वीक। क्वेश्चन नंबर 21। बिगिनिंग ऑफ मैच्योरेशन इज नोन। ऑप्शन ए menopause, ऑप्शन बी ovulation, option C oogenesis, and option D menarche. Question number 22. Which process in the 3rd week of development converts to trilaminar embryo? Option A placentation, option B gastrulation, option C neurulation, and option D disc fold. Question number 23. Cells of lading occurs in option A liver, option B ovary, option C testes, and option D spleen. आई होप आपने क्वेश्चन 20 से 23 तक के आंसर्स को मार्क किया और क्वेश्चंस को भी नोट डाउन किया होगा जी।
क्वेश्चन नंबर 20 जो है जिसका राइट ऑप्शन है डी, 28th वीक में जो जाके भी जो फीटस है उसकी आइज लाइट सेंसिटिव हो जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 का जी राइट ऑप्शन है डी, मिनार्की। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, ये बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, उसको मिनार्की टर्म यूज करते हैं उसके लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 26, अब देखिए रैबिट जो है वो रोडेंट से भी हो गया, फ्रॉग जो है वो एम्फीबियस से भी हो गया, रेप्टाइल की भी किसी एनिमल की जो एक ऑप्शन आ सकती है कि उनका गेस्टेशन पीरियड ड्यूरेशन कितना, मैमल में जो है वो ज़्यादा ह्यूमन है, या फिर ऐसे मैमल जिनका गेस्टेशन पीरियड जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। तो ये कुछ भी गेस्टेशन पीरियड के हवाले से किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम एज अ एग्जाम्पल ले सकते हैं। फ्रॉग गेस्टेशन पीरियड इज ऑप्शन ए 6 to 21 days, option B 7 to 21 days, option C 8 to 21 days, and option D 9 to 21 days. Question number 27. Blood flowing in umbilical cord of mammalian embryo is option A 50% maternal and 50% fetal, option B 100% maternal, option C 75% maternal and 25% fetal, and option D 100% fetal. आई होप अपने आंसर्स को आपने मार्क कर लिया है। आंसर की से चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए, क्रिप्टोरैकिडिज्म इज अ कंडीशन इन व्हिच टेस्टिस आर अनएबल टू डिसेंड इन स्क्रूटल सैक्स, यानी टेस्टिस के ऊपर जो है स्क्रूटल सैक जो है वो एब्सेंट होगा, ये स्क्रूटम जिसको हम कहते हैं जो टेस्टिस की मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होगी, दैट विल बी नेम्ड एज क्रिप्टोरैकिडिज्म। एंड क्वेश्चन नंबर 25 का जी राइट ऑप्शन है रैबिट का जो गेस्टेशन पीरियड है दैट इज अबाउट 32 to 33 days, यानी कि ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए, 30 to 40 days फ्रॉग का गेस्टेशन पीरियड है। एंड क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन है ए, 50% maternal and 50% fetal for the exchange of nutrients and waste. Question number 28. Thickness of uterine wall is maintained due to option A estrogen, option B progesterone, option C inhibition, and option D FSH. Question number 29. Corpus luteum develops from option A oocytes, option B nephrostome, option C Graafian follicle, and option D none of these. Question number 30. Capacitation of human sperm approximately lasts for dash while moving from oviduct. Option A 30 minutes, option B 4 hours, option C 7 hours, and option D 9 hours. Question number 31. Human eggs are option A alethal, option B macrolethal, option C mesolethal, and option D macrolethal. आंसर की से चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन है बी, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। एंड क्वेश्चन नंबर 29 जो है जिसका राइट ऑप्शन है सी, ग्रेफिन जो है ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो कॉर्पस लूटियम जो है वो डेवलप होता है ग्रेफियन फॉलिकल से। एंड क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका राइट ऑप्शन है बी, 4 hours। कैपेसिटेशन का जो ड्यूरेशन है यानी जो मेल स्पर्म है वो ओविडक्ट में 4 hours के लिए जो है वो लास्ट करता है।
एंड क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन है ए लेसिथल, क्योंकि ह्यूमन एग्स में योक एब्सेंट है, तो दैट्स व्हाई ह्यूमन एग्स आर ए लेसिथल। माइक्रोलेसिथल होगा जिनमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ योक इज प्रेजेंट, मेसोलेसिथल होगा जिसमें योक का साइज जो है वो इंटरमीडिएट है, और मैक्रोलेसिथल जिसमें योक जो है वो लार्ज साइज की होगी। Question number 32. Eggs in frogs are option A microlecythal, option B mesolecythal, option C telolecythal, and option D polylecythal. Question number 33. Blastopore is found in option A morula, option B blastula, option C gastrula, and option D nerula. Question number 34. Which of the following type of extraembryonic membranes in human? Option A yolk sac, option B allantoic, option C chorion, and option D all of these. Question number 35. What is the embryologic origin of the structure that forms the canal connecting the external ear to the tympanic membrane? I repeat the statement. What is embryologic origin of the structure that forms the canal connecting the external ear to the tympanic membrane? Option A, bony labyrinth. Option B, first pharyngeal cleft. Option C, endolymphatic duct. And option D, optic vesicle. आंसर की से चेक करते जी। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन है बी मेसोलेसिथल, एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है जिसका जो राइट ऑप्शन है सी है, गैस्ट्रूला स्टेज में ब्लास्टोपोर प्रेजेंट होता है, एंड क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज यॉक सैक एलेंटॉइस एंड कोरियन, ये तमाम मेम्ब्रेन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मैमल एग में प्रेजेंट होती है, एंड क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन है बी फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट, जो स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करता है कैनाल को एक्सटर्नल ईयर टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये कैनाल स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट है। Question number 36. The blastocele becomes the dash. Option A, amniotic cavity. Option B, extraembryonic coelom. Option C, primary yolk sac. And option D, secondary cavity. Question number 37. The primitive streak first appears at the beginning of dash week. Option A, first. Option B, second. Option C, third, and option D, fourth. Question number 38. In Echinoderm, the cleavage are holoblastic and produces option A, cells, option B, morula, option C, blastomere, and option D, gastrula. Microlecythal egg found in option A, flatworms, option B, roundworms, option C, bivalve, and option D, all of these. आंसर की से चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन है सी, प्राइमरी योक सैक, एंड क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट ऑप्शन है सी, थर्ड वीक, primitive streak first appear beginning of the third week mammal eggs में,
एंड क्वेश्चन ऑप्शन है सी ब्लास्टोमेयर। क्लीवेज जो है वो जब भी होगी तो वो ब्लास्टोमेयर में रिजल्ट करेगी, ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन है डी माइक्रोलेसिथल एग्स, राउंड वर्म्स, फ्लैटवर्म, बाइवॉर्म। क्वेश्चन नंबर 40, in the telolacithal eggs the yolk is found, option A all over the egg, option B on one side, option C both sides, and option D inner center, in center. Question number 41, extraembryonic membrane of the mammalian embryo are derived from, option C formative cells and option D follicle cells. Question number 42, inner mass of embryonic cell is, option A pluripotent, option C totipotent, option D multipotent, and option D none of these. Question number 43, human placenta is classified as, option A mesotheliocorial, option B epitheliocorial, and option C hemocorial, and option D endotheliocorial. ये सारी जो है प्लेसेंटा की टाइप्स दी गई हैं, तो इसमें ह्यूमन की बजाय किसी और स्पीशी, किसी और क्लास से भी क्वेश्चन हो सकता है। फॉर एग्जांपल के रेप्टाइल से पूछा जाए कि रेप्टाइल में, या रेप्टाइल कह रही जो दूसरे प्लेसेंटल मैमल हैं ह्यूमन के अलावा, उसमें जो है वो उनकी जो प्लेसेंटा है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, प्लेसेंटल मैमल। Which type of the tissues give rise to the notochord? Option A mesoderm, option B endoderm, option C ectoderm, and option D ovum. Question number 45, formation of primitive streak refers to the beginning of, option A neurulation, option B gastrulation, option C folding, and option D notochord formation. Question number 46, the interior end of the neural tube forms, option A notochord, option B brain, option C gonads, and option D gut. Question number 47, mother's milk during lactation is rich in, option A IgA यानी immunoglobulin A, option B immunoglobulin G, option C immunoglobulin M, and option D immunoglobulin E. आंसर की से चेक करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसका राइट ऑप्शन है ए मेसोडर्म। नोटोकॉर्ड जो है वो मेसोडर्म से राइज होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन है बी। जो प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशन है दैट इज मार्क ऑफ द बिगिनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन स्टेज। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका राइट ऑप्शन है बी। ब्रेन न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए। अमीनोग्लोबुलिन ए जो है मदर्स मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है इसमें ज्यादा जो रिच क्वांटिटी है दैट इज अमीनोग्लोबुलिन ए। और अमीनोग्लोबुलिन ए जो है बेसिकली इस वजह से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। इसकी रीजन है, उसकी लॉजिक ये है कि ये फीटस के जो फीटस नहीं बल्कि न्यूबॉर्न बेबी अब कहलाएगा, न्यूबॉर्न बेबी के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसकी कोटिंग बनाता है। और जब तक उसका इम्यून सिस्टम मैच्योर नहीं हो जाता तो तब तक जो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है, यानी जब तक जो बेबी है वो मदर फीड पे डिपेंड कर रहा है तब तक इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है रिस्पॉन्सिबल है उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रोटेक्शन के लिए। Question number 48. At which stage the uterine cycle does the secretory phase occur?
ऑप्शन ए डे 1 to 5, ऑप्शन बी days 5 to 14, ऑप्शन सी days 14 to 28, and option D days 28 to 32. Question number 49. Which of the following symptoms indicate that woman is about to ovulate? Option A, decrease in basal body temperature. Option B, increase in basal body temperature. Option C, thickening of cervical mucus. And option D, thinning of cervical mucus. Question number 50. A sea urchin sperm penetrate the jelly coat of an egg and adhere to receptor proteins on the egg surface as a result of. Repeat the statement. Sea urchin sperm penetrate the jelly coat of an egg and adhere to receptor proteins on the egg surface as a result of option A, acrosomal reaction, option B, cleavage, option C, gastrulation, and option D, cortical reaction. आंसर की से चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन है days 14 to 28. And question number 49 का राइट ऑप्शन है B, increase in basal body temperature. And question number 50 जो है उसका राइट ऑप्शन है A, acrosomal reaction. अपने स्कोर्स आप तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. कमेंट बॉक्स में अपने जो स्कोर्स हैं उनको मेंशन कीजिएगा. और आई होप आपने जो क्वेश्चंस भी नोट डाउन किए होंगे, आपके बहुत अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर हुए होंगे. यही स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स को वॉइस वर्सा करके और ऑप्शंस में से क्वेश्चन बना के बेसिकली आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं. मज़ीद इस टॉपिक को जो है वो पढ़ सकते हैं. लेक्चर सुने, अपनी जो सजेस्टेड रीडिंग्स की बुक्स आपके साथ शेयर करते हैं उनको ज़रूर फॉलो करें. लेक्चर सुने, बल्कि हमने आपके साथ तो इतनी कन्वीनियंस, आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने इतना किया कि आपके लिए जो है तक मेंशन किए हुए, ताकि आपको कोई टॉपिक जो है वो उसको ढूंढना ना पड़े बुक में से, बल्कि आपको एग्जैक्ट पता हो कि आपने किस पेज से जाके इसको रीड करना है. इसी तरह बायोलेक्चुरिया के फॉरम के साथ रहिएगा. इंशाल्लाह लेक्चर्स भी और टेस्ट भी, जब तक टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि अब थोड़ा सा मजीद टाइम जो है वो मिला है, आई होप जल्दी इसकी डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी. लेकिन स्टूडेंट्स के पास जितना भी टाइम है उसको अवेल कीजिए, अच्छे से उसको यूटिलाइज कीजिए और बायोलेक्चुरिया के फॉरम के साथ रहिए.